Have you ever thought how some people just make time for everything that they want in life and enjoy a more purposeful and ultimately a happier life? Unlike the general mass who is really busy to make improvements in their life to enjoy a more prosperous one. Have you ever imagined where your time really goes and why don't you have time for everything that you want, everything that really matters for you? हम लोग बिल्कुल तुम्हारी जैसे हैं. वी आर जस्ट अनदर बंच ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बट हमने अपने लाइफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की सोची जिससे हमें अपने टाइम पे और ज़्यादा कमांड मिल सके और हमें एकेडमिक्स छोड़ के और जितनी चीज़ों में जाना था हम वो सारी चीज़ें कर पाएँ. और अपने टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है अपने टाइम को प्लान करना. और इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि हम अपने मंथ्स, वीक्स और डेज़ को कैसे सिस्टमैटिकली प्लान कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. Now, first out of them comes is the monthly planning. Now, the most important factor or the core of monthly planning lies in a question. That is, what are the things that I'm going to do this month broadly? Once you answer this question in a satisfactory manner, list down all the activities that you're going to do in an arbitrary fashion on a sheet of paper. Now, the third step is prioritizing all those tasks in descending order of priority. In this way, only one task is going to be the most important and only one task is going to be the least important. This helps proper time allocation into all those tasks. I know prioritizing all the tasks that you're going to do this month is a really tough job, but hey, let us help you out. अपने वर्क्स को प्रायोरिटाइज करने से पहले अपने पास ये ज़रूरी है कि अपन अपने सारे वर्क्स को कुछ एक स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर लें ताकि प्रायोरिटाइज करना अपने लिए आसान हो जाए. तो बेसिकली अपने पास ब्रॉडली स्पीकिंग 3 ग्रुप्स होते हैं. नंबर 1, अर्जेंसी. इसमें तुम अपने उन वर्क्स को डाल सकते हो जिनको करना तो ज़रूरी है लेकिन अभी अभी स्टार्ट करना ज़रूरी है. तो 2 वर्ड पे फोकस है, करना ज़रूरी है और अभी स्टार्ट करना ज़रूरी है. मान लो तुम्हें अपना मैथ्स का बैकलॉग क्लियर करना है तो तुम्हें स्टार्ट करना है और अभी स्टार्ट करना है. सो तुम उसको अपने अर्जेंट वाले ग्रुप में डाल सकते हो. सेकंड ग्रुप आता है अपने लिए इम्पोर्टेंस. उसके अंदर अपन उन वर्क्स को रखते हैं जिनको करना तो ज़रूरी है लेकिन कुछ देर बाद स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे अपने क्लब्स का वर्क हो गया, जिनको करना तो ज़रूरी है लेकिन अभी अभी स्टार्ट करना उतना ज़रूरी नहीं है. थर्ड कैटेगरी होता है सेटिस्फैक्शन. वहाँ पे अपन उन चीज़ों को रखते हैं जिनसे अपने को मज़ा आता है. जैसे अपना म्यूज़िक हो गया, स्केचिंग हो गई, डांस हो गया. सो इन चीज़ों को अपन सेटिस्फैक्शन में रखते हैं. वंस एक बार तुम थोड़ा टाइम लो और अपने सारे वर्क्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो. वंस ये हो गया उसके बाद देखो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है. ज़रूरी नहीं है कि अर्जेंसी हमेशा तुम्हारे लिए ज़रूरी हो सकता है इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए ज़रूरी हो. For me, the important category is the most essential. Then comes the urgent ones and then comes the satisfactory ones. For time allocation, I follow a 50:40:10 rule. That simply means if you have a 10-hour work day, then 5 hours straight go to the important ones, 4 hours straight goes to the urgent ones, and 1 hour are reserved for the satisfactory ones. Now, as you've learned all the aspects of monthly planning on all the niche segments about it, now let's actually do it. Now, the first step that Aditya told was writing down all your tasks that come to your mind that you are going to do basically this month, and then putting them into 3 categories. First one being important, second one being urgent, and the third one being satisfaction. So as you can see here, this is my monthly to do. In the first category, that's the important category, I have mentioned post 4 YouTube videos this month, then complete 4 books this month, then complete the problem solving course of how to start a startup by Dr. Vivek Bindra. Now these are in a complete arbitrage fashion. I can just move them up or down according to their priority. Now I think post 4 videos this month should be my first priority. The second priority being complete the problem solving course, so I just swap it up. And complete 4 books this month is the third priority, so it comes to the third. Now next category being the urgent category, in which my first to do is attend all classes seriously with notes and question practice. Now that's a tough one. The second being complete the backlog of maths from previous semester. Okay, that's doable. Then satisfaction. In satisfaction, I have mentioned only one task, that's become a decent sketch artist that will help me flex out. #flex. So, and as you can see, the time spans over here, we have discussed this 50:40:10 rule earlier. So you can see 50% of my time goes to the important ones, 40% of my time goes to the urgent ones, and 10% of my time goes to the satisfaction ones. Now let's assign deadlines to each one of them on the Google Calendar.
Now as you can see, this is my Google Calendar and we have come to the date 31st of March, Wednesday, where I've set up all these deadlines. Now let's go through them. The first deadline being complete the course of entrepreneurship. Now this course is very quantitative in itself. It has deadlines, it has all inbuilt features in the app. It's a very gamified experience, and if you're serious about entrepreneurship, do check this course. It's in the link below, and it has everything that I need inbuilt inside it, so I don't need to make any external sort of deadlines for this. Then the second one is give your sketch of day 30 to a professional and take a feedback. Now I have a friend who is a professional sketch artist. I will show her the sketch of day 30 to her and take a feedback on this. Third one is send all class notes to Anvesh in PDF form. Now Anvesh is one of my great friends, and I will send all the class notes throughout this month that I've done in a PDF format to him. Next one is attempt previous year paper of maths first semester. Now that's not just a random thing that we're going to do. This month end we have planned 5 of our friends. We will go to MS Teams, make a room over there, and we will attempt previous year maths first semester paper. Now this will improve our overall accountability to do this task because we have 5 friends involved into it. And if you want to know more about the impact of accountability on time management, do consider a previous video of time management. It's really nice. Now the next one is post 4 videos this month. Now this comes with a deadline inbuilt, and it's going to be tough because we have just 2 right now. And next is complete 4 books this month and make a 1-page summary of each one of them and send them to Anvesh. Now let me explain this task. So basically what I do is, whenever I consider listening to audiobooks on Audible, and whenever I listen to an audiobook, I take notes of everything that I find really important over there. For example, I have been taking the note of Make Time that I have been reading since 2 or 3 days. Now once I take the raw notes out of it, then I convert these raw notes into a single page summary on Notion, and once I am done, I send those notes to Anvesh to review. So basically this month I have planned to do 4 books, but till now I have done only 2, so that's going to be tough as well. So yeah, these were everything about writing down your monthly tasks, prioritizing them, putting them into buckets, assigning time to each one of them, and setting up deadlines to each one of them. Now this will improve your productivity and efficiency to the next level. तो अब जब तुमने अपने पूरे मंथ का एक स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब बारी है अपने सारे गोल्स को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा अचीवेबल लगे। अब इसका बहुत एक अच्छा तरीका है अपने वीक्स को प्लान करने का। अब देखो, वीकली प्लानिंग में एक चीज़ जिसका ध्यान रखना वो ये कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना। स्पेसिफिक होने के लिए अपने पास डेली प्लानिंग है, जो हमने इसके बाद डिस्कस कर रखा है। वीकली प्लानिंग इज़ जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अ हैबिट एंड कैरिंग फॉरवर्ड द मोमेंटम। सो वीकली प्लानिंग में तुम बस वैसी ही चीज़ें रखो जो तुम्हें रोज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एक प्लान है कि तुम्हें मेडिटेशन करने की आदत डालनी है, तो एक वीकली प्लान बनाओ एट द स्टार्ट ऑफ द वीक कि तुम्हें मिनिमम 5 बार मेडिटेट करना है, और हर एक बार जब तुम मेडिटेट करो तो अपने उस चेक बॉक्स में एक टिक लगा दो। तो एट द एंड ऑफ द वीक अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हें बस 5 टिक्स है, इसका मतलब तुम अपने वीकली प्लान को अचीव कर चुके हो। तो अपने आप को रिवॉर्ड करना फिर मत भूलना। To avoid more tasks come in your way that are not so important or you don't find any future opportunities in, just say no to them. Now, it's a very crucial thing, or it's a very important thing when to say yes and when to say no, because we are just college students and might be as a watcher you are. So initially our default should stick around yes, because we need to maximize our future opportunities. But there are some tasks that we find just are not important, then just say no to them. Now if you want to know more about this, Aditya has explained this in detail in our previous video of time management, where he describes it in a form of the budgets of yes, which is an extract snapped out from the book Think and Grow Rich by Napoleon Hill. देखो, अगर सुबह उठ के हम अपने दिन को एडवांस में प्लान करते हैं ना, तो ये एक छोटी सी चीज़ भी अपने पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ कर देती है। इसके बारे में अगर तुम्हें और थोड़ा सा जानना है तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो उस वीडियो का लिंक हमने आई बटन पर डाल दिया है, तुम उसे जाके देख सकते हो। देखो, प्लानिंग योर डे का मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के तुम सारे 10 या 15 काम को लिस्ट आउट कर दो बस। ये एक बहुत ही वेग तरीका है प्लान करने का। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने स्टार्टिंग में 10-15 काम को ऐसा लिस्ट आउट किया और सबको कंप्लीट कर लिया। इससे अगर तुम इतना ज़्यादा चीज़ों को लिखते हो ना, 10 या 15 काम को ऐसा शेड्यूल करते हो स्टार्टिंग में ही,
और बाद में 2 या 3 ही अगर फॉलो हुआ तो ये फालतू का एक डिससेटिस्फैक्शन लेवल बिल्डअप करेगा बहुत गंदा सा, और रात में फिर तुम्हें नींद भी नहीं आने वाली है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। You can take the help of the to-do list app for this purpose. I have been using the to-do list app since a year now and it has put a significant difference in my life. Now, initially I used the app completely in the wrong fashion, as Aditya told about, that I ended up writing 10 tasks in the to-do list app and at night I would just complete 2 and 3 out of them and I was always unhappy. Even though after putting real work the entire day, I was unhappy because I was not able even to complete 50% of the tasks that I listed on my to-do list. Now, the right way of writing your tasks out in the to-do list is described in the book Make Time, where John Zeratsky, the author of it, describes the concept of designing your day, not just planning your day in advance. Now, designing your day out in advance shows the exact trajectory of the day and saves you a lot of time and energy from thinking what to do when out of the to-do list itself. And this process of designing your day out, and this also helps you assess the fact that how many tasks that you can do actually by the end of the day, so that you just list that many number of tasks and you don't get unhappy at the end of the day, even though you put a lot of effort and energy into checking out those boxes on your to-do list app. Now let's see how to actually plan your day. So let's jump into this portion of actual trial of daily planning by the to-do list app. So basically this is the UI of the to-do list app, and this tomorrow indicates that basically I'm shooting the video now and I've listed all these tasks for tomorrow and I'm showing them to you for the sake of this video. So let's begin. And this to-do list planning sort of thing is divided into 2 segments. First segment is for the average morning person, second segment is for the average night owl. So yeah, I'm proud to say that I'm a morning person, #flex. So yeah, let's begin. The people who consider yourself as a night owl, you don't need to watch this, just go below to this timestamp and you will reach where Aditya explains everything, how to plan your day, how to design your day for a night owl. So let's begin how to design your day for a morning person. Now, as a morning person, I wake up at somewhere around 5:30. 5:30 to 5:45 I complete the daily stuff. Once I'm done with that, the first thing that I do is meditate from 5:45 to 6 a.m. Then I complete the remaining lecture notes of integral calculus from 6 a.m. to 8 a.m. Then I attend physics classes from 8 a.m. to 8:55 a.m. Then I attend basic electrical classes from 9:05 a.m. to 10 a.m. 8:55 to 9:05 is basically the breakfast time. Attend maths class from 10 a.m. to 11 a.m. Sketch something from YouTube 11 a.m. to 12 p.m. Okay. Edit the script of third video and assign points to each one of them. Basically, I'm in charge of scripting and writing everything out. So that's from 2 p.m. to 3 p.m. Then recording the first segment of third video and uploading all segments of the second video on G Drive. That's 3 p.m. to 5 p.m. Then take 3 pictures for the thumbnails of the 3 videos. 5 p.m. to 5:15. Workout plus chill with friends. 5:15 to 6:45. Best part of the day. Complete the last segment of entrepreneurship course 7 p.m. to 8:30 p.m. Then have a talk with Mr. Dev or the status of the land inquiry. This is something that's not related to this. Then listen to the audiobook Make Time and make notes on Notion from 8:45 to 9:30. So this is what I meant from designing your day out. Now many people will shout out that this thing doesn't have any freedom, you don't have any freedom, you don't have time for doing fun and all the stuff, but believe me, this thing is fun because each and every aspect of the day is already planned out. I'm not at all confused. I have clarity whenever I do something and I'm very mindful at doing anything out of that. Even I have mentioned out workout, even I've mentioned out chilling with friends, even on the to-do list. Now that's not a serious task, but I've mentioned that as well. So I'm very mindful whenever I'm trying to do anything. So through this I avoid falling into the trap of scrolling Instagram endlessly and doing such stuff. So yeah, designing your day looks something like this, and this was all for the morning person. Now let's get over to Aditya to learn how to design the same for a night owl. देखो यार, तुम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सुबह नींद नहीं खुलता होगा, सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती होगी। मेरा भी सेम हालत है। अपन लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, नोट करो इसको। सो अपने को एक टैग दिया था नाइट पर्सन, वी आर नाइट पर्सन, ठीक है। तो अब जब अगर तुम नाइट पर्सन हो ना, तो
तो रूटीन में तुम्हें 1-2 चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे थोड़ा बहुत तुम दिन में मोटिवेटर रहो। देखो अगर तुम दिन में 10-11 बजे उठोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सो देखो एक और चीज़ ध्यान रखना कि नाइट पर्सन का मतलब ये नहीं है कि 11-12 बजे उठना है, उसको आलसी बोलते हैं। अगर नाइट पर्सन हो फिर भी तुम दिन में ट्राई करो या 9-10 बजे तो उठ ही जाओ। उसके बाद जो चीज़ें जो मॉडिफिकेशन अपने को रूटीन में करनी चाहिए वो मैंने देखो तुम्हारे स्क्रीन पे आ रही होगी, अभी एक रूटीन दिख रहा होगा। इस पे देखो फर्स्ट पे मैंने ऑडियो बुक रखा हुआ है। अब ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि अगर तुम दिन में 10 बजे अपना काम स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन रहता है। अगर तुम दिन में 10 बजे 11 बजे उठोगे, उस टाइम काम स्टार्ट करोगे तो तुम अपने आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। तो वहाँ पे अपने को छोटा सा एक पुश चाहिए होता है। उसके लिए मैं बेसिकली ऑडियो बुक यूज़ करता हूँ। तुम चाहो तो स्पॉटिफाई पे 5-6 मिनट के मोटिवेशन प्लेलिस्ट आते हैं, वो सुन लो। बस कुछ भी करो, एक किक स्टार्ट दो अपने आप को दिन में। तो फर्स्ट चीज़ ऑडियो बुक कर लो। देन उसके बाद फिर अपना दिन को प्लान कर लो अपने हिसाब से। बीच में ब्रेक्स लेते रहो, जैसा आपने 5:4:1 रूल को दिखा था। और एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि जब दिन एंड हो, जब तुम्हें रात में काम करना हो ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ रखो जिसमें तुम्हारे क्रिएटिव माइंड की ज़्यादा ज़रूरत हो। वहाँ पे रगड़ने वाली चीज़ों को कम रखना। जैसे मेरे लिए स्क्रिप्टिंग, अब देखो स्क्रिप्टिंग में क्या होता है ना, मैं ऐसे ईयरफोन लगाता हूँ, लोफाई म्यूज़िक चलाऊँगा और वहाँ पे टाइप करना रहता है। तो बेसिकली ये एक बहुत रिलैक्सिंग काम है, ठीक है। तो रात में कुछ ऐसा काम रखो जो थोड़ा रिलैक्सिंग हो, जो थोड़ा तुम्हारा माइंड को काम करे, वो आसान हो जाता है इसके लिए। एट द एंड 1-आधे घंटे के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह सेशन रख लो जिससे थोड़ा दिमाग काम हो और एक सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्डअप हो जाए रात में, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए तुम्हें फिर प्रिपेयर करना है। तो यही बेसिकली 3 चेंजेस है जो तुम्हें करने हैं अपने रूटीन में। नंबर 1, कुछ ऐसा चीज़ रखो जिससे किक स्टार्ट हो डे, थोड़ा मोटिवेटेड फील करो सुबह काम करने के लिए। सेकेंड, रात में ऐसी चीज़ें रखो, ऐसी चीज़ें शेड्यूल करो जो कि तुम्हें काम करे, जो तुम्हें थोड़ा रिलैक्सिंग लगे। और एट द एंड थोड़ा एक मेडिटेशन का सेशन रख सकते हो तुम, जिससे एक सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्डअप हो जाए। तो ये 3 चीज़ें याद रखना नाइट पर्सन के लिए रूटीन बनाते टाइम। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगता है या फिर हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो। एंड अगर तुम्हें हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट करना है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड तुम हो सके तो अपने फ्रेंड्स या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको शेयर कर सकते हो। दैट स्मॉल थिंग्स एक्चुअली मीन्स अ लॉट टू अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।